Hi everyone. So I guess all of you are doing really well and काफ़ी टाइम बाद हम लक्ष्मीकांत की सीरीज वापस से रिज्यूम करने वाले हैं. So chapter number 1 was on the historical underpinnings of the Indian Constitution, and that we have done in several of the lessons or the videos because I had to teach you every single thing. Even there were a few things which were not given in your polity book, that's Lakshmikant. So I did that from the history, so that little bit of extra thing was also done. And all the footnotes and everything has already been covered. So I think कि आपने वो कर लिया होगा. अगर आपने नहीं करा है, please go and check that because now on from here on we'll be starting with chapter number 2 of Lakshmikant. And once you're not clear with those underpinnings, ऐसे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, in your understanding. So it would be really great if you start from the first videos for the first series. And I guess I have conducted somewhere around 4 to 5 videos in that. But every minute detail has been done. And the method of making short notes out of that entire lengthy chapter, wherein each and every line is important, has already been taught to you. Please do check that out. And from here, we'll be starting with chapter number 2, Making of the Constitution. If these videos are helpful to you, do please like, comment, share and subscribe to the channel. To directly subscribe to the channel, you can hit on the icon which is displayed on the screen near my picture. You can see the logo which is printed on my t-shirt. If you hit to that, you will be able to directly subscribe. If you really need to receive the notification updates whenever any video is updated from my end, which is usually happening every other day, a different kind of videos I am uploading. So you will be constantly receiving the notification and instant भी आएगा आपको, तो आप वो बेल आइकॉन हिट कर सकते हैं यूट्यूब पे. अगर आपको मुझसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना है, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram channel also I have, and I keep informing there also. All the links are being shared, so that is also something you can just check that out. उसके अलावा आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जो NCERT कोर्सेज है वो देख सकते हैं. करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है. न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाना, एडिटोरियल्स पढ़ना सिखाना, नोट्स बनाना. Very soon I'll be covering all the other aspects of news also, the current affairs also. तो वो सारी चीज़ें चल रही है साइड बाई साइड. शंकर IAS की सीरीज़ चल रही है. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है. सारी लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है गाइस. सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. डायरेक्टली आप वहाँ से उसको ब्राउज कर लेंगे. ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड द सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल एज ऑलवेज. इन द फर्स्ट चैप्टर विच आई डिड वॉज बेसिकली, उसमें जो मैंने करा था तरीका पढ़ाने का, द मेथड ऑफ टीचिंग वॉज कि फर्स्टली I was just writing a few of the pointers, and that was not pretty convenient neither for me to write nor for you to remember or understand. So I started doing it from the PDF only. वहीं पे मैंने short notes बना के सिखाए हैं. You need to have your own copy of the book. PDF हो चाहे आपका hard copy हो, आपके सामने होना ज़रूरी है. And we are doing the 5th edition of Lakshmikant, the latest one. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नोटबुक होनी ज़रूरी है अगर आप अलग से पेपर पर कागज़ पर लिख रहे हो तो, और ऑनलाइन इफ़ यू आर मेकिंग यू कैन हैव योर ओन स्टफ्स इज वेल. बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई हैड ऑल्सो मेड ऑफलाइन, वो पहले से बनी हुई थी. एंड एक्चुअली वो एक बहुत थोड़ा क्लियर है ये एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. उसको मैंने इसलिए अपलोड नहीं करा था. दिस इज़ एक्चुअली प्रिटी फाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इस अगर आपको ये PDF जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अगर आपको चाहिए होगी तो दिस आई विल बी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम channel. ठीक है, आपको दिख रहा होगा. So this is pretty simplified. I have done this all, and therefore I have scanned the same thing. So I'll be explaining. I have my own copy of the book also opened. अगर आपको दिख रहा हो, that's opened in front of me. So you also need to have it open. I'll be sharing this PDF particularly. सारे PDF मैं नहीं share करती. You guys also know I'm not someone who is used to it or who likes doing it. But आपके convenience के लिए ये वाली ज़रूरी इसलिए हो जाएगी because I will be teaching that also alongside. ठीक है, चलो. So let's start with chapter number 2, which is titled as Making of the Constitution. Historical underpinnings, I mean the acts because of which certain provisions came in the Indian Constitution, is what we have already done. How this entire process of constitution making happened because of the Constituent Assembly, that will be seen here. All the procedures, I mean the summary of that. So this is part of your syllabus GS2 paper number 3 unit number 1, which is related to constitution. ठीक है, that's your main syllabus. So what are the sub topics that we are covering? आपको बहुत केयरफुल होना बिकॉज ये मेरे लिखे हुए नोट्स हैं तो आपको शायद इतने इजीली नहीं समझ में आएंगे जस्ट बाई लुकिंग एट इट. सो वट एवर आई एम टीचिंग, वेर एवर आई एम पिन पॉइंटिंग, आपको सिर्फ उतने पे फोकस करना है. ठीक है, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट आई एम डूइंग. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है हम इसके सब पार्ट्स कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द डिमांड, व्हाई वाज अ नीड felt for having a constituent assembly.
the composition, how it was composed, the working, the committees, and in the end the criticism. Apart from that, regarding constitution also we will do. So we will talk about enactment and we will talk about enforcement of the constitution. ठीक है, so हम सबसे पहला जो आपको दिखेगा कि हम सब टॉपिक जो शुरू करेंगे that will be from डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आपके बुक में भी आपको फर्स्ट सब हेडिंग यही दिखेगी. ठीक है, ओके. दिस कैन बी डन इन टू मेथड. आई मीन द शॉर्ट नोट्स कैन बी डन इन टू मेथड. वन इज जो मैंने ऐसे बस ईयर के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है, एंड एरो दे करके वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी, विच आई बी डूइंग राइट नाउ. Another could be when you have to make notes of these kind of things which goes in progression. ठीक है, कि इस ईयर के बाद ये हुआ. दिस इज़ वन मेथोडोलॉजी विच यू कैन यूज़ फॉर राइटिंग नोट्स. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 1934, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आपने लिख लिया. Then you have 1935, then you have 1938 and so on. So similarly this method also can be used and that's why I have written this flow chart can also be used. ठीक है, ये वाला जो तरीका है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. So we'll see हर ईयर में क्या क्या हुआ. For instance, if we start with 1934, what happened? Here, idea for Constituent Assembly. I'll be using CA for Constituent Assembly very often. ठीक है ना, क्योंकि बार बार लिखना feasible नहीं है. So idea for Constituent Assembly was put by M.N. Roy. So this is one fact which you have to write and remember, that who was the person responsible for putting forward the idea of Constituent Assembly? M.N. Roy. And that happened in the year 1934 only. कितनी पहले हो गया था आप वो सोचो. बनी असेंबली कितने बाद में, पर ये आइडिया जो M.N. Roy ने दे दिया था वो 34 में दे दिया था. 1935 INC, that is Indian National Congress. ठीक है, INC, Indian National Congress. They officially demanded the Constituent Assembly to frame the Indian Constitution. ये साथ साथ लिखते जाओ. I am being very slow. ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग आपको फॉन्ट छोटा दिखेगा. Therefore, I'll be sharing the PDF also. तो वहाँ से भी आपको दिख जाएगा. But still, please keep writing. So now there was this idea put forward in 1934. Now there was this demand asked by the Constituent Assembly to frame the Constitution. Sorry, official demand by Indian National Congress to have one Constituent Assembly so that Constitution could be framed. Then what happened in the year 1938? Jawaharlal Nehru declared for the constitution to be framed without outside interference. This is very important. So now Jawaharlal Nehru had made it clear that if Indian constitution will be framed, there will be no outside interference on the same, in the same. ठीक है, and it has to be done by, this framing has to be done by a constituent assembly. Now this constituent assembly would be elected on the basis of adult franchise. ये उन्होंने वैसे बोला था, हुआ क्या बाद में हम देखेंगे. 1940 में what happened was this demand was accepted. ये जो जवाहरलाल नेहरू की डिक्लेरेशन एंड डिमांड थी, this demand was accepted by the British government and it came to be known as the August offer. ठीक है, उसी के अंडर में उन्होंने, वैसे मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जब पढ़ा, हिस्ट्री में तो खैर पूरा ही पढ़ाया था, थोड़ा बहुत डिस्कशन करा हुआ है पहले. So anyways, if you are not too comfortable with history, when you will study, you will know all those things. ठीक है, for the time being, just remember these years, these milestones, and what all happened. तो वो notes के form में मैंने ऊपर छोटा छोटा दे दिया है. Now 1942. 1942 में there was a mission which came, which was called as Cripps mission. ठीक है, Stafford Cripps के नाम पे आया था. Now because of this mission, what happened? Draft proposal आया, ठीक है, to frame the Indian Constitution after World War II. आपको अभी बहुत छोटा छोटा दिखेगा, बट डू नॉट वरी, यू विल बी गेटिंग द PDF. वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पे जो चल रहा था, ये बात हुई कि ठीक है, क्रिप्स मिशन ने दे एक्सेप्टेड दिस, और जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल बी फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाई मुस्लिम लीग. ठीक है, और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ये रिजेक्ट हुआ. उसके अलावा उन्होंने बोला कि दो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम स्टेट्स की बात करेंगे, जो अब के इंडिया और पाकिस्तान बनने थे, उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलनी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ. 2 ऑटोनोमस, वैसे अभी मेरा भी स्क्रीन छोटा होगा, बट इट इज़ रिटन फॉर 2 ऑटोनोमस स्टेट्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 ऑटोनोमस स्टेट्स के लिए जो है इनको चाहिए थी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये बात हुई. 1946, 1942 के बाद वी आर कमिंग टू द ईयर 1946. व्हाट हैपेंड हियर? कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड. ठीक है, जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बात थी वो रिजेक्ट हो गई, बट इट्स स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग.
ठीक है, या मतलब यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया, यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया, और उस कैबिनेट मिशन में ये जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन जो ओवरऑल स्कीम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग ऑल्सो. सो हियर यू ऑलरेडी हैव दोज ईयर्स एंड यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. उसके अलावा दिस वाज द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्यों डिमांड हुई और कैसे कैसे स्टेजेस में हुई. नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द सेकेंड मेजर हेडिंग. Now, in this what happened? First of all, you need to remember कि when it was constituted. So, the Constituent Assembly was constituted in November 1946, and it happened under the scheme of Cabinet Mission Plan. Now, these are very small, minute details which you need to remember. If they ask you the reverse question, that because of which plan or which mission plan the Constituent Assembly was, or under which scheme it got composition हुई या constituted, so you have to remember cabinet mission plan. Now ये जो scheme की हमने बात करी, their scheme because of which ये हुआ, उसके भी कुछ features थे, ठीक है. So there were certain features. Now we'll be seeing all those features one by one. So the first feature, again you will be seeing कि बहुत कुछ लिखा हुआ है screen पे and you might get confused, but you do not need to get confused because whatever I am showing you, आपका focus सिर्फ वही होना चाहिए, ठीक है. So I'll try to change a bit of the color. ठीक है, फीचर्स की हम बात करेंगे. सो द फर्स्ट फीचर जो यहाँ पे आपको नंबर 1 दिख रहा होगा, नाउ दिस सेज दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो होगी 389. ठीक है, 389 टोटल स्ट्रेंथ होगी. इसको हम डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी लाइक 296 प्लस 93 में. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, आप ऐड कर लो, ऐसे भी आपको मिल जाएगा. और ये भी फर्दर डिविजन होगा 292 और 4 में. नाउ प्लस 4, अब ये क्या है, ये 389 जो है, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल स्ट्रेंथ. ओके, अगर स्क्रीन से ये थोड़ा साइड हो रहा है, कट रहा है, तो डोंट वरी, आई एम वर्बली टेलिंग दिस ऑल्सो, प्लीज राइट दैट डाउन. 296, नाउ 296 वॉज about the British India, उनकी जो seats थी, and 93 were about the princely states. So 93, these are the princely states, and this is 296 is British India. Within that also British India 292, ठीक है, they were from the governors provinces, जो British India के governor provinces थे, and 1 from each of the 4 chief commissioner provinces. यहाँ से 4 आने थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से, और ये जो आने थे गवर्नर के प्रोविंसेस से आने थे, और ओवरऑल ये सारा ब्रिटिश इंडिया के अंडर में रहना था. एंड ऑफ कोर्स दीज 93 अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स और द इंडियन स्टेट्स. नाउ हियर दीज सीट्स वर नॉट फिल्ड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स दे स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो दे स्टेड अवे, देयरफॉर वो सीट्स तो फिल्ड हुई नहीं. ठीक है, वो छोटा दिख रहा है, बट आपको जो स्कैन वाली मिलेगी बहुत क्लियर दिख जाएगा आपको. नाउ यहाँ पे जब हमने बात करी 11 प्रोविंसेस है, सो विल क्विकली सी दोज प्रोविंसेस. सो वी हैव बिहार, यूपी, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल, असम. ठीक है, सो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गए. अभी हम यहाँ से 4 की बात करेंगे. सो इन्होंने जो दिया हुआ है, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान. सो यू गॉट 4 ऑफ देम ऑल्सो फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. और ये जो 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया. नाउ एक 296 के साथ मैंने कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. सो वी विल सी दिस एरो ऑल्सो. सो नाउ द इलेक्शन फॉर दीज सीट्स हैपेंड इन जुलाई अगस्त 1946. ठीक है, इस उसमें हुआ, सॉरी, सो इट हैपेंड इन जुलाई अगस्त 1946. अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें किसको किसको कितनी सीट्स मिले. सो वी विल सी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग 73, एंड जो स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट्स थे उनको 15 मिली. ठीक है, तो ये 2-3 तरह का डिवीजन है जो हमने सारा कर लिया. ये आपको सामने से ऐसा दिखेगा, आप अपने नोट्स में बनाएंगे, बिकॉज जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तो द पर्पज ऑफ कोर्स वाज नॉट टू टीच. ठीक है, ये पहले का बना हुआ है, सो देयर वाज नो पर्पज टू टीच, एंड अभी फिर से इन सबको लिखना इज़ वेरी डुप्लीकेशन ऑफ टाइम. तो मैं अपना जल्दी नहीं कवर कर पाऊंगी लक्ष्मीकांत आपके लिए. सो एज आई टोल्ड, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. यू विल बी सीइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, विल बी डूइंग इट रियली ग्रेट एंड बहुत अच्छे से ढंग से, क्योंकि वो मैंने अभी बनाया नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल स्टार्ट होएगा फ्रॉम यूनियन एंड टेरिटरी. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली बना हुआ था, बट इट्स ओके दैट आई कैन रेप्लीकेट, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी हो जाता है.
Anyways, the second feature of the scheme of cabinet mission plan, जिसकी वजह से constituent assembly की बात हुई, so allocation of seats to each of the province and the princely states in proportion, this is very important, in proportion to respective population. जो भी उन provinces और princely states के population उनकी जो जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से based on that proportion only the seats would be allocated. So roughly it was considered that one seat would be allotted or उनको दिया जो जाएगा that would be for 1 million of population, वो उसको denote करेगा. So this was second feature. Moving on to the third feature, we see here division of seats allocated to each British province among 3 principal communities. ठीक है, जो 3 principal communities हैं कौन कौन सी, ये आपको याद रखनी है, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल. इन जनरल में एवरीबडी विल कम, ऑल द काइंड ऑफ कम्युनिटीज एक्सेप्ट द मुस्लिम्स एंड द सिख्स, बिकॉज दे आर एनीवेज कंसिडर्ड एक्सक्लूसिवली. ठीक है, सो उनकी भी जो सीट्स एलोकेशन होंगी ब्रिटिश प्रोविंसेस में दैट वुड हैपन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. सो दिस वाज थर्ड ऑफ द फीचर. मूविंग ऑन टू द फोर्थ फीचर, एज यू कैन सी हियर ईच कम्युनिटी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वाज टू बी इलेक्टेड बाई, इसलिए मैंने आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, वर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. तो हर कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होने थे उसी कम्युनिटी के मेंबर्स जो होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स लाइक इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. जब भी ये टर्म सामने में आता है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, इलेक्टेड हो गया बाई मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. So, okay, I have not done this part ना, भी फिफ्थ वाला वो करके मैं दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्यों इस चीज़ को लिखा था. Anyways, now this voting, so it happened by proportion, और वो representation जो होना था means of single transferable vote. अभी भी अगर आपने लक्ष्मीकांत थोड़ा भी पढ़ा होगा, whenever you will be studying about the election of these representatives, जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, you will be seeing that, right? So ये वाला जो representation है that happens by the means of single transferable vote. All these concepts I'll be explaining you also, don't worry about it. For the time being just remember कि constituent assembly में जब communities की बात हो रही थी तो the members they were electing, word electing, ठीक है, वो एक याद रख लेना. Secondly, जो लास्ट वाला फीचर है, सॉरी स्कीम का, हाँ फीचर है स्कीम का, heads of the princely states were to be nominated. तो जब हम प्रोविंसेस इन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो इलेक्शन हो रहा है मेंबर्स का, पर यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, द प्रिंसली स्टेट्स, देयर हेड्स वर टू बी नॉमिनेटेड. ठीक है, एंड दे वर नॉमिनेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. So this you need to remember that the Constituent Assembly was partially or partly elected body and partly nominated body also. So therefore these arrows I have given to actually show you कि these kind of statements they do give in your examination. One liner जो होता है कि correct या incorrect है, so you will have to understand, you will have to remember and recall at that very particular time that we have already seen this very minutely, that the Constituent Assembly was not only either elected body or either nominated body. It was partly elected and partly nominated. Elected किसके, जो community members जो अपने representative चुन रहे थे, and nominated जो princely states के representative heads चुन रहे थे. ठीक है, so ये आपको the heads of the princely states were to nominate the representatives. मतलब इनके representative को कौन चुनेगा, उनका head चुनेगा. I just said the reverse, but it was nominated. Okay. So this is all we have done. ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है ये सेम ही है, मतलब ये जो what I used to do was कि इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं कैबिनेट मिशन की उनकी बात कर दी है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है. तो एनीवेज दैट यू विल बी गेटिंग इन द PDF, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट इट. वी आर जस्ट सीइंग जो अभी बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं, सो दैट वी सेव टाइम ऑल्सो. Okay, now here is a note which is important. The Constituent Assembly was not directly elected by the people. Election था, but members करते थे, people नहीं करते थे. Like we vote अभी के time में, we do not vote for all the different kind of elections that happen. But yes, we also we have this universal adult franchise which is happening, and there is direct election happening by the people. But the Constituent Assembly was not directly. So again, you have to remember this. Not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise. It comprised the representatives of all section. Despite this being not directly elected by the people, the representation in the Constituent Assembly was from all section.
Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christian, SC, STs and even women from all sections were the participant. तो ये सारी लाइनें they do ask, इस chapter से यही सब line important हो जाती है. Rarely they will ask you for the numbers कि कितनी seats किसको allocated थी. That is probably not going to happen. But these conceptual things कि elected body थी कि representative body थी, अगर elected थी तो was it direct election or what is not, representative body थी कि नहीं, there were all the kind of communities representing or all the sections representing or just a few communities. So these are the conceptual वाला point. And polity में भी अब concepts important है. रटना wouldn't work, rote memorization wouldn't work anymore. Anyways, Mahatma Gandhi was not a part of Constituent Assembly. This is also again, this can very well figure out in your paper, correct or incorrect में. चलो. So we have seen the demand and working का जो मतलब इनका जो composition था. Now we'll be seeing the working of the Constituent Assembly. So the first meeting of the Constituent Assembly happened on December 9, 1946. ठीक है? It was attended by 211 members and if you see Muslim League, ठीक है, ये मैंने छोटे छोटे वर्ड यूज़ किए इसलिए मैं बता दे रही हूँ. Muslim League, they boycotted the meeting, but they were insisted on a separate state of Pakistan. Now, who was the temporary president? Because when you have to start the working of the assembly, you need to have those people on those positions, right? Very obvious. So, who was considered as the, or who became the temporary president then? So, the oldest member उस time पे practice की वजह से जो oldest थे, who was Dr. Sachidanand Sinha. So you need to remember his name, that he became the first temporary president. Later the president got elected, and who got elected? Dr. Rajendra Prasad of Constituent Assembly. I mean for Constituent Assembly. And then there were two vice presidents. अगर आप बात करेंगे तो H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. So these are the names: Sachidanand Sinha, Rajendra Prasad, H.C. Mukherjee, V.T. Krishnamachari. These are the names which you need to remember. You will also have to remember that which position did they held. ठीक है? उसके अलावा जो टोटल हमने सेशंस की बात करी थी, ठीक है, इतने मेंबर्स हुए, तो 11 सेशंस हुए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, which went over a period of or span of 2 years, 11 months, 18 days. 2 साल 18 महीने 11 महीने और 18 दिन. सो ऑलमोस्ट 12वां महीना ऑलरेडी खत्म हो रहा था. अगर थोड़ा और हो जाता तो वो 3 साल ही कंसिडर होता. ठीक है? सो ये पूरे स्पैन में ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिन में there were 11 sessions of the Constituent Assembly, and also they tried to draw help from the constitution of 60 other countries. जहाँ से उनको जो ज़रूरी लगा, they took those provisions. They saw that how it is applicable in the Indian context, in the Indian scenario. Will it work for the Indian society if it has worked for the other country? And therefore they somehow accommodated that. And the final session of the Constituent Assembly happened on January 24, 1950. So you can see the first meeting and the final session. Fine? Okay, then there is this one thing which you have to study a bit detail about, which is objective resolution. Not detail as such, concepts यहाँ पे important है, but then if you see the points, if you just go through them once, I think it will be in your head. And once you revise this, so twice reading would suffice. Now this objective resolution, ये था क्या? Now this resolution तो आपको समझ आ ही रहा है. So this resolution was moved, and the name itself says objective resolution. So a resolution जिसमें हमने objectives की बात करी है. ठीक है? Objectives मतलब aims and objectives वाले जो objectives होते हैं. That what do we intend to achieve? So objective resolution. This was moved by Jawaharlal Nehru. So these are the factual points which you need to remember. That who was the person responsible for moving the objectives resolution. So Jawaharlal Nehru did that in Constituent Assembly. It happened. This was moved on 13th of December 1946. Now what was the purpose, or what did it lay down? It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. This is very important. जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का जो पूरा बेसिक होना था, जो बेस फंडामेंटल पॉइंट होना था, जो फिलॉसफी होनी थी, दैट वाज काइंड ऑफ एडवांस्ड में वो चीज़ बता दी गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. So what were the features, or what were the point which were put forward by this objective resolution? We'll just quickly see, and these are some additional points, so we will quickly see that also. Objective resolution, it was unanimously adopted by the Constituent Assembly. Unanimously मतलब जब सब members agree कर रहे हैं, ठीक है, everybody was agreeing to that, there was no objection. So it was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947. It was moved on 13th January 1946. Unanimously it was adopted on 22nd of January 1947.
the modified version of the objective resolution came out to be the preamble of the present constitution. This again features out as one of the major question which they do ask in the paper, that what is the kind of replication आप बोलो या फिर modified version बोलो. So they'll give you कि preamble है, fundamental rights है, duties है, DPSP है या कुछ और है. So उस time पे if you have not read this or if you have skipped this chapter considering कि नहीं हमें तो सिर्फ article 1 से ही पढ़ना है, you will be missing out on these questions. So do not take them lightly. Everything is important. At least एक बार की reading ज़रूरी है. ठीक है, चलो. Okay, now we will see all the points also. First of all, to proclaim, जो objective resolution में इन्होंने बात कहनी चाहिए वो क्या थी? That we wanted to proclaim India as an independent sovereign republic. ये सारे words अगर आप once you study these features of the objective resolution and you remember the preamble, ठीक है, तो वो आपको word से खुद ही relate हो जाएगा. And even if you do not remember that this has to be the answer, you will mark this as the answer because you can relate. This is how you relate in those questions when you don't know the exact topic. So anyways, so the first point was to proclaim India as an independent sovereign republic, to draw up a constitution for future governance. India को हमें independent sovereign और republic proclaim करना है और एक हमें ऐसा constitution बनाना है जो future में governance के लिए use हो. Okay, then another point is related to the union of all territories. ठीक है, तो जो सारे territories के हम union की बात करेंगे, union मतलब एक combined जो होगा, which that point of time comprised British India, जो India का portion British के अंदर था, the formed the Indian states and the other parts also outside India. So when you will study that article related to union and its territories, you will see how similarity we find there also. States and other territories which were willing to be considered into independent sovereign India were also to be included. The territories with the present boundaries of the ones which are decided by the Constituent Assembly to have status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration except those specifically related to यूनियन. तो यहाँ पे क्या है कि वो सारी टेरिटरीज जिनकी प्रेजेंट बाउंड्रीज जो है वो अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड करनी है, उन सारे टेरिटरीज को जो स्टेटस मिलेगा वो ऑटोनोमस यूनिट्स का, अपने ऑटोनोमस मतलब आप खुद का देख सकते हैं, उनका स्टेटस मिलेगा टुगेदर विद द रेसिडुअरी पावर्स. जो भी अगर यूनियन या प्रोविंसेस के अपने अपने या स्टेट्स के अपने अपने पावर्स नहीं है तो मतलब उसके अलावा जो पावर्स है जो उनको दिए गए हैं वो रेसिडुअरी पावर्स उनको मिलेगा. And exercise all the powers and the functions of the government and the administration. Government और administration के सारे powers और functions वो exercise कर सकते हैं except the ones which were specifically related to the union. अब कुछ ऐसे power हो जाएंगे जो national defense, security इन सब चीज़ों से related होती है, that has to be taken care of by the union. But उसके अलावा वो सारे functions ये सारे territories जो हैं वो decide कर सकती हैं, autonomous उनको मिलेगा. All power and authority to be derived from people. Again, the preamble says, right? So we the people of India. और हमें पता चलता है कि authority हमारे constitution की कहाँ से मिली है? People से मिली है. So it also showed like that. To secure the following to all the people of India. तो सारे लोग जो हैं इंडिया के उनको कुछ चीज़ें देना ज़रूरी है. किस तरह की चीज़ें? जो objective resolution कह रहा था. Again, you will see similarity with the preamble if you have ever read the preamble. By chance, if you have not, आफ्टर दिस वीडियो गो एंड चेक द प्रीएम्बल. बस एक रीडिंग कर लो, लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी, हर किताब की उसमें भी रहती है. एनीवेज, सो टू सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया दीज फॉलोइंग थिंग्स: जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. फ्रीडम, किस किस चीज़ की फ्रीडम? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, वोकेशन की, एसोसिएशन की, एक्शन की, एंड सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. दीज इवन इफ यू आर गिविंग जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी फ्रीडम भी अगर आप दे रहे हैं बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. कोई उसका ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड एज द प्रोविंशियल. अगेन दिस, ये जो मैंने साइड में लिखे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट. अभी अगेन छोटा आपको दिखेगा, पीडीएफ में देख लेना, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-1952. जो फर्स्ट, अभी जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं ना 5 साल में, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1951-1952 में हुआ, तो
उसके पहले अब अगर कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई है, सो देयर हैज टू बी अ पार्लियामेंट, अ लॉ मेकिंग बॉडी. सो विच बॉडी एक्टेड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट. दिस अगेन फीचर्स आउट इन योर प्रीलिम्स पेपर. ठीक है, अगर वो पूछेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली, एक दो, दे वर परफॉर्मिंग 2 फंक्शंस. एक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. द सेकेंड फंक्शन टू एक्ट एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया until and unless the new parliament was formed after the new election, sorry, this general election. ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी विथ 2 हाउसेस. ठीक है, ये हुई ईयर मुझे भी अभी बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है. सो इट इज फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउसेस, मई 1952 में हुआ. एंड ये क्या, यहाँ जो मैंने लिखा है, इट सीज टू एग्जिस्ट ऑन 17 अप्रैल 1952. फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी, वो बंद हो गई. वो उस तरह से काम करना बंद हो गई अप्रैल 17, 1952, बिकॉज पार्लियामेंट अब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इलेक्शंस के बाद. ओके, सो देयर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही रिलेटेड है, कि और आपको लोगों को क्या क्या देना है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए. Adequate safeguards for the minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes. Again, if you will see कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को लेकर के प्रोविजन है. टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक. ठीक है, एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस. तो आपको दूसरे सिविलाइज्ड नेशंस के हिसाब से भी, जब आप लैंड, सी, एयर वगैरह की बात कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कितनी इंटीग्रिटी रखनी है, कितना आपका एज अ रिपब्लिक कंट्री राइट होना है, सोवरेन राइट्स कितना होना है, जस्टिस या लॉ बाकी जगह के भी क्या होते हैं, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंटेन्ड टू अटेन दी राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन दी वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंट्री के बारे में फोकस करना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, वर्ल्ड में भी आपकी क्या पोजीशन होगी, दैट हैज़ टू बी important. So to attain rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to promotion of world peace and welfare of the mankind. So you have to take care of world peace and welfare of mankind also. Constitution making was completed on 26 November 1949. ये जो छोटे छोटे मैंने साइड के डेट्स लिखे हुए हैं, आपको एक जगह पे अपने नोट्स में लिखने हैं. 2 functions of Constituent Assembly which I just informed verbally. Making constitution and exercising the enacting the ordinary laws, क्योंकि parliament बाद में आया. The Constituent Assembly became the first parliament of free India. ठीक है, जो dominion legislature बना. So again you will have to remember कि although India got independent, India was free now, but the first parliament in India was the Constituent Assembly and not the parliament we understand today. That happened 1951-52 में जो election हुआ उसके बाद. But initially for the few years, Constituent Assembly was the first parliament of free India. Constitution making, ठीक है, जब उसकी हम बात करेंगे, वैसे तो ये अगले पॉइंट से रिलेट हो जाएगा. This one I'll be taking up in the next video. But anyways, I'll quickly show you this. So chairman Dr. Rajendra Prasad and law making chairman की जब बात हुई थी, जो law making वाला जो काम हो रहा था वो कौन कर रहे थे? So who was the chairman for that? GV Marvelekar. ठीक है, तो ये 2 नाम जो हैं आपको याद रखने हैं. और ये वाला जो पॉइंट है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, विच आई हैड टॉट इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उसकी वजह से क्या चेंजेस आए, दैट विल बी सीइंग दिस एंटायर पोर्शन. सो आई क्विकली ब्राउज थ्रू द PDF so that you understand कि हम आगे क्या करेंगे. And this is the other functions of Constituent Assembly apart from constitution बनाना, draft करना and law making. Then you had certain committees of Constituent Assembly, so you can see the name of all the committees. वो एक जगह लिखी गई है, major and then minor also, so that you have the list at one place. Then you and therefore I don't want you to waste time in this, so I'll be providing you the PDF, but I'll be providing the PDF on the Telegram channel. ठीक है, तो अगर आपने मेरा Telegram channel अभी तक नहीं subscribe करा है, the name is Progressive Step with Arpita. But anyways, if you do not find that, the DP will be similar to what I have put everywhere. ठीक है, मेरे टी-शर्ट का जो लोगो है, वाइट कलर की वाली फोटो है, जो आपको यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, बट उसकी लिंक दी हुई है. एंड आई विल व्हाट आई डू इज टू इसके जो कमेंट में आई पिन, ठीक है, पिन द कमेंट एंड आई पुट द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आगे से अब जो भी नेसेसरी PDFs होंगे, आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग ऑल द PDFs. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड अलॉन्ग विथ मी, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर यू. लेकिन जो नेसेसरी होंगे, अब जैसे ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं, मैं इसी से पढ़ा रही हूँ, तो ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो काम मैं आपका आसान कर दूंगी. आई बी गिविंग यू दैट PDF. ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट आई विल बी गिविंग यू द PDF वंस द एंटायर चैप्टर इज डन.
वो मैं पहले से नहीं करूँगी कि आधा मैंने अभी पढ़ाया तो मैं दे दूँ फिर मैं दूसरा पढ़ाऊँगी. आई बी क्विकली फिनिशिंग दिस चैप्टर. ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, सो ये हो जाएगा आई गेस एक और वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 छोटे छोटे और वीडियोज़ लग सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू फिनिश सम इट अप इन 1 वीडियो ओनली. तो उसके बाद मैं आपको दे दूँगी, ठीक है. उसके बाद यू हैव अ बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड देन एज आई टोल्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यू हैव दिस which is enactment and enforcement. What is the difference between that? So I have given it in this tabular manner. You will be seeing that, and then you have the community wise representation in the Constituent Assembly, and why was it criticized also, different reasons for that, and in the end you have this entire chart. ये आपको book में भी है, so it's not that important, but I have scanned. So you will have, you know, the portfolios which were held, फिर उनके मेंबर्स कौन कौन से थे, फिर बाद में भी पहले जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से मेंबर्स थे, और फ्री इंडिया में कौन कौन से मेंबर्स थे. तो इस तरह से मैंने करके आपको कोशिश करा है कि सब कुछ हैंड रिटन यहाँ पे मिले, सब कुछ दिख रहा है, बट आप कितने एफर्ट करते हैं वो मुझे नहीं पता. दैट विल एंटायर, द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन योर एफर्ट एंड नॉट माइंड. सो प्लीज़ बी विथ मी, सपोर्ट मी, प्लीज़, यू नो, हेल्प मी स्प्रेड द वर्ड. आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताइए तो मैं भी अपने पूरे एफर्ट्स दे पाऊंगी. एंड आई एम एनीवेज विथ यू, सो डू नॉट वरी. विल बी मीटिंग इन दी अनदर वीडियो एंड विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट. विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, ठीक है. So see ya guys, till then take care. Do not forget to subscribe to the channel and do like, comment, share also. Chalo, bye bye, see you again, take care.